Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is real number for class 10th. In this chapter we will discuss the first topic, that is Euclid's division lemma. So what do you mean by Euclid's division lemma? Is nothing but the division algorithm which we have studied in the junior classes. है ना? We have studied the division या divisibility of the number in the junior class, है ना? For example, suppose we have 7 chocolates, we have 7 chocolates, we have to put 3 chocolates in different boxes. So we got the 2 boxes over here for 3 and 3 chocolate, that is for 6 chocolate, and 1 chocolate is remainder, है ना? 1 chocolate we got the remainder that cannot be put into the boxes. So we can write the 7 chocolate is divided into 3 parts such that you got the 2 boxes and 1 as a remainder. 1 chocolate is left with us, है ना? In this you can say that this is our divisor, this is our dividend, okay, this is our quotient and this is our remainder. Okay, in the junior classes we have studied the division of the numbers or division of the integers, है ना? In this chapter we are going to see the division of the integers only, है ना? तो Euclid division lemma is the statement which are be proven, मतलब कि the proved statement which can be prove another statement, है ना? That is the definition in the book. A lemma is a proven statement used for proving another statement, है ना? So comes to here, this number is known as dividend, this number is known as divisor. The boxes come over here, that is 2, that can be written as quotient, and the remaining chocolate can be written as the remainder. Okay, take another example. If we have total 9 chocolates, है ना? If we have total 9 chocolates, so this 9 chocolates we have to put 3 chocolates in a different boxes, 3 chocolates in a different boxes. So on dividing this with 3 you will get the result 3, and the remaining chocolate will be 0. So this is our quotient, this is our what? Divisor, okay, this is our dividend, okay, and this is our remainder. So we can write these relations between the dividend, divisor, quotient and remainder. That is the different thing, है ना? And that can be written as the algorithm, है ना? So that there is a definition of the algorithm, that is an algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problems, है ना? स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं. बाय यूजिंग दैट स्टेप यू कैन फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई एल्गोरिदम इज द वेल डिफाइंड स्टेप्स, है ना? दैट्स वाई एल्गोरिदम is the well defined steps. By using that step you can solve any type of problem. So the first type of question is,
first of all we will see the algorithm. After that before that we will see here that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So we can write this as 9 is equal to 3 into 3 plus 0. 9 can be written as this. The first example was 7 can be written as 2 into 3 plus 1. Okay, you can take more examples like this. You will get the relation, that is dividend is equal to divisor into quotient into remainder, sorry divisor into quotient plus remainder, है ना. द एल्गोरिदम इज, मान के चलो कि यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया. एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3 है, दूसरा क्या है 7 है. तो यहाँ से यूनिक वैल्यू निकलता है या यूनिक इंटीजर निकलता है, डेट इज़ 2 and 1, है ना. तो डेट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सी फॉर एनी टू गिवन positive integer, that is a and b, there exists unique whole number q and r such that it satisfies this relation, है ना. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा is nothing but it is given that given two positive integers, है ना, which gives two unique whole number, that is मान के चलो कि दो पॉजिटिव इंटीजर हमारा a and b था, इससे हमारा यूनिक वैल्यू निकलता है q and r which are whole, which can be whole number, है ना. सो विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So we can write, if a is greater than b, you can write a is equal to b into q plus r. Okay, after that the second case, if a is smaller than b, you can write b is equal to a plus q, sorry a into q plus r लिख सकते हैं. तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि हमको SCF निकालना है. क्या निकालना है? SCF निकालना है. तो दो नंबर का SCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं. हेयर वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर, है ना, द SCF ऑफ द गिवन नंबर. तो SCF निकालने के लिए एल्गोरिदम जानना ज़रूरी है ना. तो एल्गोरिदम को ना जानकर पहले हम क्वेश्चन पे पहले उसको डिस्कस करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा मतलब कि वो नंबर पे हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे एल्गोरिदम देखेंगे. ठीक, टेक और राइट द क्वेश्चन लाइक दिस, फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर दैट इज 60 and 36 by using Euclid's division algorithm, है ना. The first question is find the HCF of 60 and 36 using Euclid's डिवीजन लेमा. ओके,
See, this is the greater number is written as the dividend. So 60 can be written as 36 into 1 plus 24 as the remainder. So here you can say that, देखो हम लोग का जो रिलेशन था A is equal to B into Q plus R, where R is greater and equal to 0, okay, and less than B. ठीक, लेस देन B, मतलब कि अगर B के वो बराबर हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लेकिन B से छोटा रहेगा R का वैल्यू एंड B से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा R के, ठीक है. सो फ्रॉम हेयर you can see that this is not the SCF, this we have written, that is 60 is equal to 36 into 1 plus 24. So if the remainder becomes 0, then this divisor will be our SCF. So the remainder is not equal to 0, that is R is not equal to 0. So we will move to another step. This is our step 1. Okay, we will move to another step. So the 36 become our dividend, that is equal to, this moves as the divisor, that is 24 into 1 times, so it becomes 24 plus 12. Okay, now again we will compare that remainder. If remainder comes 0, we will stop our calculation, है ना. Here remainder is not equal to 0, so this divisor becomes our dividend, that is 24 is equal to, and this remainder becomes our divisor, that is 12 into 2 times, that is 24 plus remainder is 0. So here we have come, that is R is equal to 0, the remainder becomes 0. Therefore you can say that the SCF of 60 and 36 is equal to 12. We have said that, I have said that, that is divisor will be our SCF. So the SCF is 12. We got the step 2 and step 3 also. So जब तक R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक हम ये स्टेप करते जाएंगे, और इसी स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं. क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, है ना. तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया होगा. ये हम लोग नंबर से समझे इसलिए आसान लग रहा है. यहीं पे बुक में हमारा दिया हुआ है वेरिएबल पे, है ना. तो वेरिएबल पे भी देख लेते हैं कि क्या है एल्गोरिदम, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइजेज बना सकते हैं, ठीक है. सी वी हैव अ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम. हियर वी हैव टू find the value of the variable, that is SCF of A and B, where A is greater than B. मतलब कि A जो है वो बड़ा है किससे, B से. उस कंडीशन में हमको SCF निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप विल बी आवर ऑन डिवाइडिंग A by B. ठीक, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो हमको क्वेश्चन क्या मिल रहा है, Q, एंड रिमाइंडर वी आर गेटिंग, that is R, such that A is equal to BQ plus R, where R is greater or equal to 0 and less than B. The second step, if R is equal to 0, अगर मान को चलो कि डिवाइड करने के बाद R का वैल्यू यहीं पे 0 आ गया तो we will stop our step, है ना. You will get the required answer, that is SCF is equal to, that is the divisor value, है ना. If R is not equal to 0, then applies the division lemma to B and R, that is
वी कैन अप्लाई डिवीजन लेमा किस में और किस में, B and R, that is B will become our dividend and R will become our divisor. So we will continue the process till the remainder is 0. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा हम लोग ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे. एंड द लास्ट डिवाइजर विल बी आवर द रिक्वायर्ड एचसीएफ. हमने जस्ट अभी एक एग्जांपल देखा, दैट इज एचसीएफ निकालना था 60 and 36 का. ठीक, तो हम लोग डिवीज़न लेमा में क्या देखें कि 60 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 24. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दिस इज आवर द फर्स्ट स्टेप है ना. फिर हमने चेक किया कि R का वैल्यू 0 आया तो नहीं आया, दैट इज 24 आया. सो वी देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू B एंड R. तो B के जगह पर क्या है 36 और R की जगह पर क्या है 24. तो इसमें और इसमें हमने अप्लाई किया, फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 24 एंड प्लस दैट बिकम्स 12. ओके, अगेन वी चेक दैट इट इज द R इज इक्वल टू 0 और नॉट. तो यहाँ पे R का वैल्यू 0 नहीं है, 12 है. So again we apply the division lemma to B. Here B is our 24 and R is 12. So 24 is equal to 12 into 2 plus 0. So here the remainder comes 0. The last divisor will be the required SCF. The last divisor is 12. Therefore the SCF of this and this, मतलब कि SCF of 60 and 36 is equal to 12 है ना. Like this you can do the exercise, that is the first exercise of real number. Okay, thank you class, have a nice day.